student, let's begin with a very important theorem. BPT is known as basic proportionality theorem or Thales theorem. Okay, it is a very important theorem which is frequently asked in the board exam, or we can say every year, almost every year it is asked. So from the board examination point of view, this theorem is very important, as well as the exercise number 6.2 is fully depend on this theorem and its converse. Okay, so please try to understand. Now, what is a theorem? It is known as BPT in short, or it is also known as Thales theorem. कभी कभी एग्जाम में आपको कहते हैं prove Thales theorem. So don't get confused. It is the same thing. Thales theorem is same as basic proportionality theorem. What is a theorem? I am reading the statement. If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in the distinct point, the other two sides are divided in the same ratio. What is asked? If a line drawn parallel to one side of a triangle, so it is a triangle ABC. A line is drawn parallel to one side of a triangle, that is DE parallel to BC. It intersect the two sides in two distinct points. So it intersect AB at D and AC at E. Then the other two sides are divided in the same ratio. तो क्या होता है उससे कि जो बाकी की दो साइड है वो सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती है. दैट इज AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. Here we have to prove that AD upon DB is equal to AE upon EC. And what is given? DE parallel to BC. It is given. Okay. So before I prove the theorem, मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि suppose अभी आपका ये triangle है. Suppose this is triangle A, this is B, and this is C. And this DE is parallel to BC. If it is given, DE parallel to BC, it is given. Then by BPT you can write AD upon DB is equal to AE upon EC. Have you understood? इस theorem से हम लोग क्या conclusion निकालने वाले हैं? Again see this figure. This is suppose PQR and here EF. This EF parallel to PR. EF parallel to PR. This EF parallel to PR. So by BPT you can write QF upon FR is equal to QE upon EP. QF upon FR is equal to QE upon EP. This is BPT. This is known as basic proportionality theorem. Suppose consider the third case X, Y and Z. Here this suppose AB parallel to XY. So by BPT you can write ZB upon BY is equal to ZA upon AX. और you can write Z, और आप ऐसे भी ले सकते हो YB upon BZ equal to XA upon AZ. और you can write this PE upon EQ is equal to FR upon QF. So understood BPT? एप्लीकेशन आपको इसका ऐसे करना है. नाउ वी आर गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम. ओके, प्रूव करने के लिए एवरी ईयर जैसे मैंने बताया फ्रीक्वेंटली बोर्ड में पूछा जाता है. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम. सो व्हाट इज गिवन? विल स्टार्ट फ्रॉम द गिवन कि पहले इसमें गिवन क्या है. अ गिवन दैट अ ट्राइंगल इज गिवन टू अस. वी आर गिवन अ ट्राइंगल ABC in which in triangle ABC a line parallel to BC, a line parallel to BC intersect two sides AB and AC at D and E respectively. Okay, that is we can write, आप लिख सकते हो DE parallel to BC. This is given. And what is TPT? We need to prove that AD, the sides are divided in the same proportion. That is AD upon DB is equal to AE upon EC. This we have to prove. Okay. To do this, to prove this, we need a construction. Now, what construction we need? So, first of all, we have to join this BE and DC. यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है. सो लेट्स जॉइन BE
एंड सी डी। सो हम ज्वाइन कर देते हैं बी ई को और हम ज्वाइन कर देते हैं सी डी को भी, ठीक है। इसके बाद वी नीड अ परपेंडिकुलर, सो लेट्स ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, ड्रॉ दिस डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आप ए सी पर, लेट्स नेम इट एम, दिस इज डी एम परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ, देन ड्रॉ dm perpendicular to AC and EN, one more perpendicular, EN perpendicular to AB. Let's draw EN perpendicular to EN perpendicular to AB. E or this is N. EN is perpendicular to AB. Okay. So I hope यहाँ तक आपको समझ में आया होगा. Now let's start the proving part. First of all I am going to explain you कि हम इसे proof कैसे करेंगे. तो can I find the area of triangle ADE? What is the formula? Area of a triangle ADE का formula क्या है? It's half into base into height, isn't it? So ADE में if I am taking base AD अगर हम base ले रहे हैं तो height क्या होगा? EN होगा of course. ये 90 डिग्री है, ये perpendicular है. Okay. Then can I calculate, can I also find area of a triangle BDE? ये देखिए ये है BDE, क्या हम इसका भी एरिया निकाल सकते हैं? यस. इफ आई एम टेकिंग बेस BD तो हाइट क्या होगी? यहाँ पे हाइट कहाँ है? यहाँ तो नहीं है फिलहाल, इस ट्राइंगल में तो नहीं है. इट इज एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, सो हाइट इसकी बाहर है, ट्राइंगल के बाहर है, उसकी हाइट है EN. अंडरस्टूड? जब भी आपका ऑब्ट्यूज ट्राइंगल होता है लाइक इस तरीके से, यहाँ देखिए सपोज अगर ये इस ऐसा कोई ट्राइंगल है, इसका आपको एरिया निकालना है. सपोज ये ABNC, यू नो दिस इज अ बेस, सपोज ये 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर. सो परपेंडिकुलर आउटसाइड होता है, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सपोज हाइट अगर 10 सेंटीमीटर है तो हाइट हम 10 लेंगे. सेम केस इज हियर इन ट्राइंगल BDE. BD इज अ बेस एंड हाइट इज EN. ऑलराइट. Then we'll find the ratio of these two. मतलब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ अ ट्राइंगल BDE. इससे जो रिजल्ट मिलेगा हमको दैट विल बी आवर स्टेटमेंट नंबर 1. Then in triangle again ADE we'll find the area of a triangle ADE. Now this time we'll consider base AE and height DM. And in triangle DEC, this side base EC and height DM, this will give us a statement number 2. And then we'll say कि अब उसके आगे क्या होता है, that I will explain you afterwards. Let's solve till here first of all. All right. So let's start solution. ठीक है, सबसे पहले proof, solution नहीं, इसको proof कहेंगे हम लोग. Proof. First of all, triangle, area of a triangle, area of triangle ADE is equal to half into base AD into height EN, right? ठीक है. Similarly, how will you find area of triangle BDE? How will you find area of a triangle BDE? Area of triangle BDE is equal to half, base is BD and height is EN. Okay. Now then we'll find area, therefore area of triangle ADE upon area of triangle BDE is equal to, what is area of triangle ADE? It is half, what is base AD and what is height EN, upon half BDE का base क्या है BD and height क्या है EN. Can we cancel EN and half? Yes. So what we have? We have AD upon BD and give it number 1. All right. Then similarly we have area of triangle ADE upon area of triangle DEC is equal to half into ADE में, see the figure, अभी ये जो ADE में है इसमें हम AE को बेस लेंगे और DM हाइट होगा. सो AE मल्टीप्लाइड बाय DM अपॉन
half DEC. This is DEC. Base is EC, but height is DM only. So base is EC and height is DM only. Again DM get cancelled, half get cancelled, and we have AE upon EC. This is number 2. Can I compare 1 and 2? Yes, of course, but यहाँ पे एरिया ऑफ ADE अपॉन BDE है और यहाँ पर एरिया ऑफ ADE मतलब ये ADE और AD है, बट ये जो ट्राइंगल्स है वो डिफरेंट है, BDE एंड DEC. अगर ये दोनों सेम होते तो हम LHS इक्वल है इसलिए हम बोलते RHS भी इक्वल है और ये दोनों प्रूफ हो चुके होते. यही हमें प्रूफ करना था TPT में. AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, इजंट इट? लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इस ट्राइंगल का है, ये दोनों ट्राइंगल इक्वल नहीं है. लुक एट दिस फिगर, ट्राइंगल BDE. लुक एट द फिगर BDE. देखिए आप ये ट्राइंगल BDE को देखिए अच्छे से, ये है आपका BDE और दूसरा ट्राइंगल है DEC. Do they lie on the same base DE? Yes. Remember, just try to remember that in 9th standard you learn that triangle lie on the same base and same parallel are equal in areas. पढ़ा है ना आपने ये चीज, ये थ्योरम आपने पढ़ा है 9th standard में. तो here the triangle BDE and triangle DEC lie on the same base DE and between same parallel. ये दिया है हमको DE parallel to BC, so we can say that their areas are equal, right? तो ये भी equal हो गए. फिर वो होगा हमारा थर्ड स्टेटमेंट और comparing 1 2 3 we will get the result. Okay, so now we can write triangle BDE and triangle DEC are on same base DE and between the same parallels BC and DE. Therefore area of BDE is equal to area of DEC. Give this statement number 3 and from comparing 1 2 and 3 we will get the result AD upon BD is equal to AE upon EC. क्योंकि LHS इक्वल हो गया तो RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल. Hence proof